LinkedIn is like a gold mine. You can find anything you want from there only if you're willing to find it out. And the fact that you're deserving of it. B2B के अंदर आप पहले मिडिल मैनेजमेंट से बात करोगे, फिर ग्रेजुअली आपको नहीं पता कि डिसीजन मेकर है कि नहीं, बजट है कि नहीं, अथॉरिटी है कि नहीं, ठीक है, क्या क्या अभी अर्जेंट रिक्वेस्ट है कि नहीं, मल्टीपल क्वालिफायर लगेंगे, आपकी मीटिंग्स होंगी, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होंगे, मार्केटिंग, इनसाइड सेल्स और सेल्स के लोग जो हंटर्स होंगे, फिर देन अ डील गेट्स क्लोज. थिंग्स दैट हैपन इन लाइफ इज लाइक ट्रायल एंड एरर. So that's exactly how it is. तभी तो उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगे. Full scale blow up तो वैसे भी मेरे ख्याल से I think a responsible marketing guy or a sales guy or a brand guy would not do. They would like to find out कि क्या चीज़ work कर रही है और मुझे उसमें कितना पैसा डालना है या घटाना है. Thank you Devan for giving us your time today. आपसे हम बात करने आए हैं about content creation. You're such a great content creator on LinkedIn, on Instagram. तो वो कुछ बातें करेंगे आपसे कुछ सीखेंगे. Your journey of marketing in general वो सीखेंगे. But before that, again, thank you very much for giving us your time today. And थोड़ा सा आप introduce कर दो that who is Devan Bhalla and like what should people know about you? Okay, I think in a nutshell, I'm basically like into marketing. I would say 100% Delhiite and love to create content on LinkedIn. Slowly, I'm just getting into the habit of creating something on Instagram and public speaker. I've been on TEDx and not a great content creator, but a great content creator in the making. इंशाल्लाह. नहीं, वो देखने वाले की नज़र से होता है ना, तो Right. मैं देख रहा हूँ तो Thank you. मतलब if like you were saying that you were trying to achieve 10% of something that and even that seemed like a lot. So to us, this what you're doing, even 10% of that seems like a lot. So आपको मतलब since you're in that process, you might not think it's a lot because you're having high Yeah. ambitions for yourself. True. जैसे आपने अभी 100K कंप्लीट करा है और आप बता रहे थे कि आप सेलिब्रेशन अभी कर नहीं पाए हो. हमारा नहीं, सॉरी, मेरा 10K हो जाएगा, मैं शर्ट फाड़ के भागूंगा. तो मैं प्रोटीन केक खाऊंगा फॉर प्रॉपर 100K के ऊपर. देखो अब हो जाए जल्दी तो. इंशाल्लाह. एंड लेट्स होप कि जो लोग देख रहे होंगे आपको, दे ऑल्सो गो एंड फॉलो यू इफ नॉट ऑलरेडी, एंड दे ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी दैट वी आर गोइंग टू रिवील टुडे इंशाल्लाह. So Here's hoping. yeah, here's hoping. Fingers crossed. But what's your journey been like? Where did you complete your schooling from, and what did you study and Okay. pursue? So for me, I think it's primarily been for a considerable period of time I was in Delhi only. So I am an alum of Mount St. Mary School, Delhi Cantonment. Okay. It's a very prominent Roman Catholic school from the Irish brothers, patrician brothers. It's a typical society, and post that, I basically had my majors in science, PCM. Nice. With economics. Same. And then I appeared for a couple of competitive exams, cleared most of them, took Bharatiya Vidyapeeth College of Engineering, got into one of the top branches, EC. कौन से वाला कॉलेज? BVCOE. अच्छा. And post that, I was a department rank holder there, published a few papers. There was a lot of to and fro कि MS करना है रोचेस्टर यूनिवर्सिटी जाके और go for a typical MBA journey. So it's like BTech plus MBA. Okay. So वो MS और MBA की लड़ाई में MBA जीता. क्यों जीता? And I got to know from a lot of people. I was working at McKinsey when it just start ही किया था उनके knowledge center में काम करना, and I was working on the solutions. So उस समय मैंने देखा, मैंने कहा यार बहुत सारे लोग engagement managers जो हैं, they get a lot of visibility, they get to talk to the clients. Otherwise, if you're in a tech role, maybe you'll just end up being somebody in the back end. Right. So I was the techie who got transformed into like a marketeer and a much more a front-facing kind of a role. The thing that I wanted. And then CAT का first attempt दिया था, got into one of the newer IIMs, the baby IIMs. Now it's no longer a baby IIM. It's like considerably grown to a good level where we can talk about their placements and exposure. So went to Indian Institute of Management Sambalpur, and there fell in love with marketing and strategy. Then took up minors in analytics,
and PPO था फिर then I decided to pursue that and मुझे तो बहुत मज़ा आया marketing and This all. is the first time I'm hearing someone from IIM give such a descriptive feedback of IIM. Okay, you fell in love with marketing there. So what happened Yes. that made you fall in love with marketing? That was it this like curriculum? I Was it the professor? I think it was a healthy mix of कौन से professors आके पढ़ा रहे थे. Do you remember any Case names? studies, I remember a lot. They are tagged so many times. I will be tagging them on this also when I do like a proper descriptive post on this. Descriptive post, right? So I think Ashish Sath sir has been phenomenal. Mr. Kender Parker from Goa Institute of Management, he taught Okay. us sales and distribution management. Okay. And Bipul Kumar sir, excellent. Then Prantosh Banerjee from IIM Ahmedabad. Okay. I won't say he's my favorite. I think he's every MBA student's favorite. Okay. Like Who's he's from like- IIM? Yeah, he's FPM from IIM Ahmedabad. Okay. He, I think from a course-wise perspective, I think उन्होंने consumer behavior पढ़ाया था and I have been in an eternal love stories with neuroscience and consumer behavior Okay. since then. मैंने इतनी बुक्स पढ़ी हैं. Whenever I get the time, there's some exchange of notes with him. And Mr. Naveen Kumar Das, he's from NSHM Kolkata. Okay. Again, he himself is an IIM Ahmedabad graduate. So all IIM people who Faculty. have been there, and it's been amazing. Obviously, I definitely got to learn a lot from them. So curriculum, teachers, and I think the way in which concepts are taught at an IIM is completely case study. Textbook आपको मतलब ऐसे कभी कभी देखने को मिलती है. I think it's everything is there in their binders that it's just awesome. मतलब मुझे बहुत सारे सब्जेक्ट्स से मुझे पता भी नहीं चले कि मैंने कब पढ़े हैं. Okay. कोई एडिशनल रीडिंग मटेरियल भी था मैं वो ही पढ़ लेता था. फिर उसके साथ फिर टेक्स्ट बुक भी पढ़ लो. कुछ था नहीं यहाँ पर करने के लिए. यू कैन जस्ट डू दैट, पार्टिसिपेट इन बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स. जो सीख रहे हो वो फिर अप्लाई करो. सो आई थिंक फॉर मी द बी स्कूल जर्नी वाज एक्चुअली लाइक अ बी स्कूल जर्नी. यार ऐसा डिस्क्रिप्शन एक्चुअली में मेरे को किसी कॉलेज के बच्चे ने नहीं बोला है. मैं वही तो कह रहा हूँ. मैंने बहुत लोगों से बात करी. हाँ. मैंने बहुत लोगों से काम किया IIM वालों के साथ. मुझे इतना अच्छा रिव्यू आज तक नहीं मिला. IIM अहमदाबाद का नहीं मिला आज तक इतना अच्छा रिव्यू. मतलब एक तो रिव्यू भी होता है और इन जनरल भी अगर मैं IIM का नाम हटा दूं तो अपने कॉलेज के बारे में उस जर्नी को कि मैंने सीखा एक्चुअली में इतना कुछ करा, ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है ना. लोग बहुत सारी गालियां तो भर ही देते हैं बीच में, ये सब फालतू था, ये था, वो था. जैसे अभी वन ऑफ माई टीम मेंबर्स ही केम टू मी एंड ही सेड कि मुझे कैट करना है, छुट्टी चाहिए. मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 1 महीने की छुट्टी चाहिए. पर मैंने क्योंकि थोड़ा सा वो मेंटर वाला वो आ जाता है, तो मैं फिर भी समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों. तो हर किसी से मैं ये पूछता हूँ MBA करने के लिए, जो पूछने आता है मुझसे कि MBA करनी है, मैं पूछता हूँ क्यों करनी है MBA, राइट. तो उसने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, विच उसके आगे मैंने कुछ नहीं बोला. उसने बोला मेरे कॉलेजेस रेडी हैं, मुझे IIM बैंगलोर फॉर दीज रीजंस आई लाइक. वो अपनी रिसर्च करके आया हुआ था. तो उसके आगे आई थॉट कि ठीक है, चल इतनी क्लैरिटी है कि इसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तो देन इट्स फाइन. वरना एक बहुत जनरल सा सेंस बना लेते हैं कि MBA करना है और IIM तो चाहिए ही. IIM कौन सा, कुछ पढ़ा है उसके बारे में, टीचर्स क्या हैं, कुछ भी रिसर्च है आपकी, वो नहीं होता. 20% हाइक के लिए कर रहे होते हैं ज़्यादा लोग. I don't understand that logic. मतलब since you मतलब those people mine is like back end to front end. वही मतलब बहुत ही मतलब this sounds really cool. मतलब and did you have a sell me this pen moment with any of your professors that was the coolest moment that you can remember from your IIM journey? I think that wasn't with the professors. I think it was with the trainers who came on campus right before our placement season started. So उसमें मुझसे तो नहीं पूछा था ये sell me a pen. So they were like, yours is more like a brand kind of a profile. For those who were more on the sales side, उनसे पूछा था, and I think most of them were able to address that. It's you create a need and then you gratify it immediately. कि मतलब I think one of the best ways was कि मुझे एक पेन देना, उनके पास पेन नहीं होगा तो फिर ठीक है ये वाला आप पेन लो and then this is the special discount for you. It was as simple as that. Like it's one of the possible solutions because MBA के अंदर मैंने जो चीज़ सीखी है, there are no right answers. Okay. A question can have multiple possible solutions. Which solution you choose? Can you back it up with data? Can you back it up with insights?
and उसी के अराउंड लाइक इट्स लाइक अ प्रॉपर पैकेज दैट यू नीड टू प्रेजेंट. इसीलिए वो केस स्टडी बेस्ड जो अप्रोच रहती है, आई थिंक उसके बाद से मैंने बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स थी विच वर एड्रेस्ड. यू वर इवन मार्केटिंग स्टूडेंट्स वर चेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि क्या क्या हेल्थ है, Okay. आर दे इवन विलिंग टू मेक दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस नई टेरिटरी में जा सकते हैं कि नहीं. आई लव्ड इट. Sounds lovely. इतने क्वेश्चन तक मुझे एक्सप्लेन कर, मैं पढ़ाई कर लेता. बड़े टाइम बाद अब आज मन कर रहा है पढ़ने का. वही. I think even engineering के अंदर भी I think we had like considerable exposure. Hmm. I wouldn't have gotten into research undergrad level पे. मतलब DRDO में अगर internship चल रही है, मैं जून के महीने के अंदर एक लौता स्टूडेंट हूँ जो कि फाइबर ऑप्टिक्स के लैब में बैठ के अकेले ऑप्टिम पे काम कर रहा है. Okay. Nobody is there. A third year student is not expected to be on campus if they are doing external training. And I was like doing external training, then I was coming to campus just to simulate those same findings that I have discussed with my mentor, Mr. RM Singh. He was one of the F level scientists, I think, very senior guy in At DRDO. Yes. So But you also mentioned that you wrote some papers while in your undergrad, Yes. right? So what kind of papers were you writing? so Do you like those were studying? Or is I this would like... say- नहीं obviously यार नहीं, इतना. I'm asking है, मतलब I would say that for me a good day is if I'm sitting in the mountains, मेरे बाजू में चाय या कॉफ़ी पड़ा है, खाने का कुछ नहीं है, and it's slightly drizzling and I have a book in my hand. Okay. Like it's like peace for me. मतलब ये same चीज़ I can replicate, and I know that a dreamy day for me is like there's slight drizzle going on in Kasoli. I'm sitting on the ridge and then I'm maybe reading something and have a cup of coffee or proper chai. So yeah, these days I'm reading on geopolitics. Okay. अच्छा. So are you interested in getting into some... I think it's more involved in UN or on some level? I was at the campus level. I was working with UN MUN. World Humanitarian Summit. Okay. So it was like a proper. I was their campus ambassador. Then volunteered for a couple of initiatives also under UN volunteers. And I think in addition to that, Baki, in whichever way, I think these days, so more through my content, I have been working on mental health. In addition to brand case studies. So I love to create my own case studies and then I publish it on LinkedIn and then give like a swipe up on Instagram so that I people saw can read. on Instagram that you... So it's like एक proper मैंने बनाया हुआ है एक छोटा सा folder type on my Instagram story highlights. Okay. So it's like LinkedIn. So Right. or marketing magic. वो दोनों चीजें मैंने add करी हुई and then I keep on refreshing my featured section Right. on LinkedIn as well. But मुझे ये पूछना था कि I saw your LinkedIn, we both saw, and you have a humongous experience, right? Like you have multiple internships and jobs and मतलब experience, I would say. What has been your best experience so far in terms of knowledge? I think in terms of, I would divide it into two parts. Okay. The first one is, getting on the job training. I think that was one of the first stints at an edtech startup, which was a part of a bigger business empire. Okay. And continues to be like that. And I learned a lot from my manager. She was, I would say, very hands-on, very demanding in terms of कि ये quality चाहिए, ऐसे करना है. Her name is Bhakti Shah. Okay. And she has always been very mindful कि हाँ टीम को ऐसे रखना है, ऐसे काम करवाते हैं. There were days where we had our tiffs, minor tiffs, but then I think I kind of knew, and she also knew, that for the overall development for the company, for the team, for her, for me, it is required that there are things that challenge the team, there are things that challenge her, me, and then how somebody grows from it. So I think that has been like an amazing experience for me. That's how I got into content marketing. Okay. I got into content, then I got into content marketing, and then there was more on data analytics and then insights. I would say business intelligence was the outcome of that, in addition to becoming a marketer. So I got to pick up a lot of things around, how do you map your position in the company with respect to top line, bottom line and customers. Okay. तो उस तरीके से मेरे को तो वो वाला रोल तो बहुत सही लगा. And then my current role that I'm in, where I'm getting to, as a marketer, I think it's definitely, taking it to the next level, where I'm working on a range of projects. So basically leading social media, leading media buying and planning, leading SEO
for the enterprise side of the business, leading the demand generation, account-based marketing पूरा मेरे पास, and then in addition to that, performance. So it's like end to end. Right. Then there are smaller subsets of influencers, communities, and even some to an extent, maybe to an extent, I think, internal branding, and then the complete brand strategy piece as well. Okay. So it's like me. So I don't label myself as somebody who's I can't exist without my team. So my team, people who report into me, and obviously my manager and one of my peers also, they have been like really instrumental in taking and giving that support wherever it has been required. And then obviously it has contributed immensely to my growth on a personal level as well as at a professional level also. Right. So you mentioned account-based marketing. So we hear it across all industries, especially SaaS industry. Yes, absolutely. So can you, like, for lack of a better understanding, can you break it down, account-based marketing as a concept? That what is it and how does it work in general? Sure. So account-based marketing is like the long form. It's also AKA ABM. Yeah. सो ABM का पूरा फंडामेंटल ये है कि आप एक कंपनी के पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, हर कस्टमर को डील करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है. हो सकता है किसी एक अकाउंट के अंदर अकाउंट या एक ऑल्सो नोन एज द क्लाइंट हो सकता है उसमें कुछ लोग आपके फेवर में हो, कुछ लोग आपके फेवर में नहीं हो कि इस कंपनी के साथ डील करना है कि नहीं करना है. कुछ लोग हो सकता है न्यूट्रल हो और आपको उनको यू नीड टू विन देम ओवर. जब आपको रिन्यूअल करना है या आपको अपसेल करना है, क्रॉस सेल करना है, तो आप उनके प्रमोटर्स को जो आपकी साइड पे हैं, डिट्रैक्टर्स को जो आपके अगेंस्ट हैं, पैसिव जिनको फर्क नहीं पड़ रहा ज़्यादा कुछ, दे आर लाइक न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू योर ब्रांड, राइट. हाउ डू यू मूव देम टुवर्ड्स ब्रांड इवेंजलिज्म? हाउ डू यू विन देम ओवर? Okay. Right. So it's like not I would say every account has a very customized approach. हो सकता है कुछ के लिए प्लांट लेवल इंटरवेंशन ज़्यादा ज़रूरी हो, कुछ के लिए टाइमली डिलीवरी ज़्यादा ज़रूरी मैटर करता हो, ठीक है. तो ये एक कट हो गया. फिर दूसरा है सीनियरिटी ऑफ द पर्सन. Right. So the somebody who's at a C-suite level, they would look at something very specific in terms of आपका solution कैसे contribute कर सकता है to the top line, bottom line. हो सकता है उनका कोई preferences हो. Maybe for them it's a customer first company or it's a tech first company, or their vision is more on the ESG compliance side. ठीक है. So can our messaging be integrated with what they are looking at? So marketing is all about being saying the right thing in front of the right person at the right time and then getting the right set of And results. how do you do this research कि आपको कैसे पता चलेगा कि because you said personal preference also. Yes, एक तो हो गया yes. assumption कि एक सी सूट के लिए क्या डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो उन चीज़ों के बारे में बात करें, और एक ऑपरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें वो Yeah. आपको पता चल जाएगा उस बिजनेस में. बट पर्सनल प्रेफरेंस इज टोटली डिफरेंट कि वो क्या डेटा पॉइंट उसमें से भी छांट के क्या चीज़ उसको दिखानी है. तो ये कैसे पता चलेगा आपको? There are two ways. जो टिपिकल एक मार्केट रिसर्च प्रॉब्लम होती है, ये मार्केट रिसर्च प्रॉब्लम ही है, ठीक है. Yeah. यू नीड टू फाइंड आउट इनसाइट्स अबाउट एन इंडिविजुअल, Yeah. राइट. दो तरीके हैं. एक तो है जो आई वुड से द की अकाउंट मैनेजर्स, जो कि बिजनेस हेड्स जो उनके साथ डील कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस विद द प्लांट हेड, Right. या इंडिविजुअल्स के साथ जो एंड यूजर्स हैं, जो सी स्वीट हैं. सो दे गो देयर एवरी वीक. जो भी एक टिपिकल कस्टमर सक्सेस के लिए भी एक रिक्वायरमेंट होता है, कस्टमर डिलाइट लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो उनसे हमें इंसाइट्स मिल जाते हैं कि हाँ ये लोग ये मीडिया कंज्यूम करते हैं, इनका ये पेन पॉइंट है, या मीटिंग के अंदर उन्होंने कोई चीज़ हाईलाइट करी हो, या आप अपने एंड से भी पता लगा सकते हो कि बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, बिजनेस का प्रायोरिटी क्या है, राइट. देन इन एडिशन टू दैट आप डिजिटल प्रोफाइलिंग भी करते हो. यू फाइंड आउट फ्रॉम देयर लिंक्डइन what their preferences are. Maybe there's a tool that can help you in identifying Right. कि इनका risk taking profile किस तरीके का है, Okay. right. So are they somebody who are an initiator? Are they somebody who's instrumenting something? Are they somebody who's more of a moderator? How do you find out? तो वो सब चीज़ें you can find out through maybe a third party tool. You can dig deep yourself, find out किन influencers को follow करते हैं, किन pages को follow करते हैं, कैसा content consume करते हैं. First hand information आ गई, second information आ गई. You have more than enough information to build that profile and then act accordingly. And how actively do you pursue this? कि ये मतलब what I'm asking is कि
इसके अराउंड कोई प्रोसेस है जो कि एक फॉलो होता है कि अगर कोई वहाँ पे लेट्स से जा रहा है, काम कर रहा है, सो दे प्रोबेबली आई डोंट नो फिल अ फॉर्म और व्हाटएवर, बट एक प्रोसेस से वो डेटा टाइमली मैनर में भेज रहे हैं कि Yes. So I think for most businesses, a quarterly net promoter score is rolled out, NPS, okay. also known as an NPS. उससे आपको पता लग जाएगा कि प्रमोटर कौन है, उन्होंने आपको क्या रेटिंग दी है आपके ब्रांड को, प्रमोटर कौन है, डिट्रैक्टर कौन है, पैसिव कौन है, ठीक है. Right. उसके हिसाब से देन यू कैन रिफ्रेश योर स्ट्रैटेजी, Got it. ठीक है. एंड देन यू नो एवरीथिंग अबाउट मार्केटिंग इज अबाउट बीइंग डायनामिक. आप बॉम्बार्ड नहीं कर सकते अपने क्लाइंट्स को कि आप हर महीने हमारे लिए एनपीएस फिल करो. क्वार्टरली इज अ सेफ Right. thing. Even if you do it biannual, like every 6 months, That also works. that also works depending upon the business requirement और इंडस्ट्री में कितने फ्लक्चुएशन हुए हैं. आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च है and you would want to like do like a soft launch with them, get their feedback, initial feedback, because businesses or brands don't get built overnight. Yeah. It is a proper process and it's an iterative process. Yeah. अगर आपको you need proper validation, आपके customers are your holy grail. They will tell you what is working for them, what is not working for them, because उनका response is topmost And priority. I think जब तुम्हें कोई इंसाइट आया है तो तुम एक लेट्स से कैंपेन में अगर कुछ स्विच भी करोगे एंड यू विल वेट फॉर सम टाइम टू सी रिजल्ट्स क्या हैं, उसमें काफ़ी टाइम गुजर ही जाता है. हाँ, and I think marketing के अंदर एटलीस्ट मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता हूँ, that is more around being an experimentalist. राइट. So you do like a small pilot, check out the results, then start like adding a little bit of money to it. जितना आप खुद के ट्रैक्शन आप क्रिएट कर सकते हो, आई थिंक दैट्स आई वुड से फॉर अ मार्केटर, आई थिंक दैट्स like one of the best outcomes. So it's like somebody is an outcome driven marketer and not just somebody who's operating in a black box. Right. Because आपको end to end पता होना चाहिए कि आपने ये एक स्टेप लिया और उसका आपका ये बिजनेस इम्पैक्ट आएगा. अगर मैंने यहाँ से लीवर चेंज किया तो वहाँ पर कितना बढ़ेगा घटेगा. So you need to know exactly, it needs to be in your complete understanding and control. अच्छा, इससे एक क्वेश्चन है. आई वर्क विद अ लॉट ऑफ मार्केटर्स और B2B SaaS में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि हमारे मोस्टली SaaS कस्टमर्स वो B2B में ही हैं. वी वर्क विद अ लॉट ऑफ VCs ऑल्सो. तो वो VCs, सो B2B SaaS के जो OG मार्केटर्स हैं वो जाके थोड़ा टाइम VC में काम करते हैं, तो हम उनके साथ फिर से काम कर लेते हैं. सो उनसे मैंने कुछ चीज़ें टेक इन करी हैं, बट वो पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट है. कोई किसी तरह ऑपरेट करता है, कोई किसी तरह, जैसे आपने बोला सम पीपल आर आउटकम ड्रिवन. Yes. राइट. सो लेट्स से इफ यू लेट्स से यू आर कंसल्टिंग अ न्यू कंपनी, कोई एक SaaS प्रोडक्ट है एंड उसको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है. राइट. सो हाउ वुड यू गो अबाउट इट? एक नया SaaS प्रोडक्ट जो कि लेट्स से कोई एक सैचुरेटेड मार्केट में है, तो व्हाट वुड योर जनरल स्टेप्स बी कि अब मैं 1 साल के लिए अगर इनको कंसल्ट कर रहा हूँ, देयर जर्नी शुड बी लाइक दिस, व्हाट शुड दे डू? Okay, so I think there would be like a couple of questions that I would definitely ask. पहला तो what is the the duration for which they would want to find out कि हाँ हमारे ये customers हैं, इनका ये profiling है, so is that available, is that readily available or not? ठीक है, because a lot of the times अगर SaaS company B2B SaaS है, so they will have people in the management, senior, middle and then junior, right? किसका क्या impact point है, ठीक है, what is it that they are looking for? आपका जो प्रोडक्ट है, इज इट फिटिंग दैट? वो प्रोडक्ट मार्केट फिट पहले हो गया था, या इज इट लाइक प्रोडक्ट पहले बन गया और अब उसका मार्केट फिट ढूंढ रहे हैं? बहुत लोग यही करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही होता है. इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू अप्रोच द प्रॉब्लम फ्रॉम द अदर साइड. सो इट्स आइडियली दैट इज नॉट सपोज टू बी डन. सो जब आपको पेन पॉइंट पता लग जाए, देन यू नीड टू स्टार्ट डूइंग स्मॉल पायलट टेस्ट ऑन योर ओन टू फाइंड आउट कि यार किस तरह का मैसेजिंग दे आर मोर रिस्पॉन्सिव टू. इज इट So that is when you start doing your channel selection. In addition, while you are mapping your communication strategy, right? Agar these people are more driven by numbers, right? So then you can do like a single image, very basic LinkedIn ad, works amazingly well. ठीक है. Are there somebody who would want कि plant level पे आप intervention करो, कोई digital product है and you would want that implemented for better visibility, tracking, track and trace and all of that. So if it requires plant level, then जो plant level वाले लोग होंगे, they might be situated in tier 2, tier 3, tier 4 cities and towns. ठीक है. Maybe LinkedIn is not the best way to reach out to them. What is plant level? Plant is basically आपका कोई भी कंपनी हो सकता है कि हेडक्वार्टर हो सकता है दिल्ली NCR हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, बट हो सकता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो शायद स्मॉलर टाउन एंड सिटीज में हो.
तो वो plant is basically where the actual uh, manufacturing, assembly, and then dispatch is happening for either other businesses or for end consumers. तो it could be so B2B को अगर आप full form देखोगे तो it could be businesses working for other businesses or it could be B2B2C. right, मतलब those businesses that are catering to the end customer but they are your clients. right, Right? So you need to find out कि वो value chain क्या exist कर रही है. Value chain का when you have the complete visibility, कि end consumer को ये लोग कैसे impact करेंगे, क्योंकि उनका revenue ठीक हो रहेगा, उनका profit margin, profit after tax is good, their interest coverage is good, right? So that's where you need to study the client also, and then उसके हिसाब से then you start rolling out your communication strategy, क्योंकि आप अपना तो brand build करोगे ही, but then you also need to solve a burning issue for the client, right? अब या prospect. So for if they intend to get more levers out of a particular marketing communication, उसके ऊपर आप डबल डाउन करो so that at least आपका demand generation is taken care of. Parallelly also do your own brand building. राइट. सो अगर आप बोल रहे हो कि आपने इस कंपनी के लिए हेल्प कर रहा है, बिकॉज मोस्ट कंपनीज डोंट वांट टू रिवील कि वो किसके कस्टमर्स हैं, सो देन मे बी यू कैन ट्वीक इट अराउंड. You can say a leading XYZ company, which makes it a bit obvious. Yes, you talk about a data point, you ask them कि आप join our webinar, download this case study, have like intensive pillar content around it on SEO, which are basically optimized through for search engines, right? Then obviously do your entire media mix accordingly. ठीक है. और ये सब चीज़ें need to be checked. एंड ये नहीं है कि हम लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, ये पूरा साल भर हम चला लेंगे, ऐसा तो नहीं है. अगर आपका एक क्वार्टर एक्स लेवल आपने हिट करा है तो यू वुड डेफिनेटली लाइक टू रीच 1.5x in the next 3-6 months, right? So every quarter the target needs to be revised, and then you need to work in tandem with marketing team में जो आपके peers हैं. अगर मैं कंसल्ट कर रहा हूँ तो मार्केटिंग टीम के जो मेरे पीयर्स होंगे, इनसाइड सेल्स के अंदर क्या आपका मूवमेंट हुआ, उन्होंने कितना क्वालिफायर लगाया, उसके आगे सेल्स के आगे कितने लोग गए, फनल कितना ऑप्टिमाइज है, लीकेज कहाँ हो रही है, फिक्स कैसे कर रहे हैं, राइट? एंड देन हाउ इज इट गेटिंग ट्रांसलेटेड टू द टॉप लाइन एंड द बॉटम लाइन ऑफ द कंपनी दैट आई एम कंसल्टिंग. एंड यू आर श्योर कि ये सारी चीज़ें कैन बी डन फ्रूगली फॉर, बिकॉज काफ़ी सारे बिजनेसेस वो प्री इन्वेस्टमेंट और प्री रेवेन्यू होते हैं जब, एंड इन जनरल फाउंडर्स की, फर्स्ट टाइम फाउंडर्स की ये मिस्टेक ही मान लो, जो कि नोन है, दैट दे सी मार्केटिंग एज अ सेकेंडरी ऑपरेशन इन देयर, वो कि प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे, सब कुछ करेंगे, मार्केटिंग को पीपल इग्नोर इन द बिगिनिंग. बट इफ लेट्स से समबडी प्रायोरिटाइजेस वट एवर यू सेड, दिस होल ये एक्सपेरिमेंटेशन और काफ़ी कुछ है आपने जो बताया है, दिस कैन बी डन फ्रूगली बिफोर यू रेज. आई थिंक सी डिपेंडिंग की क्लाइंट कौन है. D2C है तो वो तो मास मेलिंग भी करेंगे तब भी उनके टी शर्ट्स बिक जाएंगी, राइट? मतलब इट्स लाइक यूजुअली द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ, एटलीस्ट फॉर देम, कम्युनिटीज, व्हाट्सएप कम्युनिटीज, फेसबुक ग्रुप्स, यू कैन स्टिल मोस्ट ऑफ द कंपनीज दैट स्टार्टेड इन दैट स्पेस, मतलब ऑर्गेनिक चैनल्स हैं जहाँ पे फॉर देम गेटिंग द ट्रैक्शन इज क्विकर, बिकॉज कस्टमर का जो प्राइमरी पेन पॉइंट है वो है कि मुझे टी शर्ट लेनी है, प्लग एंड प्ले है, ठीक है, सेल्फ सर्व है, राइट? B2B businesses are a institutional buy-in, राइट? यहाँ पर एंड कंज्यूमर ने एक एक्शन ले लिया, आपने सामान बेच दिया, फिर आप उनके ऊपर रिटेंशन मार्केटिंग चलाओ, ये डिस्काउंट है, ये सेल है, आप आके खरीद लो, वो कर लो, ठीक है. बट B2B के अंदर ऐसा नहीं होगा. B2B के अंदर आप पहले मिडिल मैनेजमेंट से बात करोगे, फिर ग्रेजुअली आपको नहीं पता कि डिसीजन मेकर है कि नहीं, बजट है कि नहीं, अथॉरिटी है कि नहीं, ठीक है, क्या अभी अर्जेंट रिक्वेस्ट है कि नहीं, मल्टीपल क्वालिफायर लगेंगे, आपकी मीटिंग्स होंगी, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होंगे, मार्केटिंग, इनसाइड सेल्स और सेल्स के लोग जो हंटर्स होंगे, फिर देन अ डील गेट्स क्लोज्ड. द टिकट वॉल्यूम्स आर वे हायर इन B2B एज कंपेयर टू अ B2C सेल्स साइकिल बड़ा भी है, राइट? सो द रिवॉर्ड्स एंड द रिस्क नीड टू बी मैप्ड, एंड देन इन्वेस्टमेंट नीड्स टू बी डन. But soft launch करके, by doing it in a limited geography or for a limited set of people, you can find out कि which channel is working for you. That doesn't require like a lot of investment. So I think your customer acquisition cost / your cost per lead needs to be managed well, और उसी के accordingly you should park budgets into marketing. So we also built a SaaS product, and like we
लास्ट ईयर. तो हमने उसको लॉन्च करने से पहले व्हाट वी डिड वाज वी रैन अ फेक डोर एक्सपेरिमेंट जनरल. इट्स अ वेरी Okay. पॉपुलर एक्सपेरिमेंट. तो उससे वी गॉट वेरी गुड ट्रैक्शन, मतलब बिफोर हैविंग एनी प्रोडक्ट और एनी रेवेन्यू. बट हमने एक पेज बना के डाल दिया और वी पुट अ पेमेंट लिंक ऑल्सो. And there were people who were ready to pay for that particular problem set that we had before we had a product. So that came out to be a very good insight for us. तो उसके basis पे we started out building, right? Understood. But यहीं पे एक दूसरी fallacy ये भी हो सकती है that you spend too much time in research before you launch something or Yes. start something. It needs to be managed properly. Hmm. तभी पायलट रन करना ना इज एक्चुअली द मोस्ट टैंजिबल फीजिबल ऑप्शन, बिकॉज आपको पता है कि हाँ ये मेरा हाइपोथेसिस है. व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन? यू विल गेट टू लर्न Yeah. कि हाउ नॉट टू डू इट, राइट? दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज हाउ टू डू इट. 100% मतलब. So it's like most of the things that happen in life is like, you know, trial and error. So that's exactly how it is. तभी तो उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगे. Right. फुल स्केल ब्लो अप तो वैसे भी मेरे ख्याल से आई थिंक अ रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग गाय और सेल्स गाय और अ ब्रांड गाय वुड नॉट डू. दे वुड लाइक टू फाइंड आउट कि क्या चीज़ वर्क कर रही है और मुझे उसमें कितना पैसा डालना है या घटाना है. अब हमें ये नहीं पता कि हम रिस्पॉन्सिबल थे या गरीब. आई वुड से यू वर स्मार्ट. यू वर Right. स्मार्ट. But so yeah, if are there any things that you would think that you learned in IIM that were completely worth the price? Like, I understand that you had a great experience, but do you see some, because you've been working after IIM also, right? So there might be some things that you were like, यार मैं इतने सारे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे ये सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि IIM में मैंने देखा और समझा और सीखा. So are there any gems like that you learned and that you noticed that you only learned because of IIM? आई थिंक इट्स द अंडरस्टैंडिंग कि लाइफ टेक्स्ट बुक्स के बाहर होती है. Okay. दैट इज वॉट आई लर्न देयर. Okay. 60 लोगों का बैच, 60 की पर्सनैलिटीज बहुत अलग थी. ठीक है. सो यू ऑल्सो टेंड टू ग्रो अ मच मोर थिकर स्किन कि किसकी बात सुननी है और किसकी बात नहीं सुननी है. सम पीपल आर इम्पोर्टेंट बट मोस्ट पीपल टेंड टू बिकम ट्रिवियल फॉर यू. Right. राइट. वही पर्सनैलिटीज, उसी से मिलती जुलती पर्सनैलिटीज आपकी लाइफ में आगे भी आती हैं. वेर यू नो कि किसकी बात सुननी है, किसके ऊपर रिएक्ट करना है, किसके ऊपर. आई एम स्टिल लर्निंग, बट देन वो एक फाउंडेशन था मेरे लिए टू अंडरस्टैंड दैट यू नो योर प्रोफेसर्स एंड अ वेरी 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 फ्यू फ्रेंड्स वुड एक्चुअली विश वेल फॉर यू Right. एंड दे आर स्टिल इन माई लाइफ. राइट. बाकी लोग आर मोस्टली फेंस सिटर्स एंड देयर आर सम हु विल जस्ट ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन. सो यू जस्ट नीड टू बी वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ आपकी एनर्जी आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है. वही वाला जो टाइम आपने XYZ फालतू चीज़ें करने में लगाते हैं आप, वो आप अपनी पढ़ाई पर, अपनी लाइफ प्रोजेक्ट्स पर, बी स्कूल कॉम्पिटिशन्स पर, you know getting associated with prominent brands and you know doing some good internships, going out for travel with those close friends. So it's like you know कि क्या चीज़ आपके लाइफ में बेस्ट है, उस बेस्ट के ऊपर आप टाइम लगाकर, so you play to your strengths, you don't play to your weaknesses. Right. So that's how it is. और मैंने तो एटलीस्ट वो ही सीखा है वहाँ पे. यार देवन जैसे जैसे अपने कॉलेज की बात करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है भाई कहाँ कहाँ रह गए यार वो दिन. ये कितना बढ़िया, मेरे को मज़ा आ रहा है यार बात करके, सुन के कि कॉलेज का आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, मतलब नेक्स्ट लेवल. हाँ, but मतलब so you basically, just to sum up what you said, you basically learned people management skills majorly in college. People management and time management, right? operations management, marketing management, कोई फंडा सीखा? brand management, Did you also business management, peg management वगैरह कुछ था? Peg management. नहीं, I have never even tried that. अच्छा, okay, that's great. वहाँ पर शर्त लगी थी कि वो अपने बाकी के मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वहाँ पर, they won't show up at the convocation if I didn't try. Some of them didn't show up for the convocation. बढ़िया है. But outside of this, so you started your journey on LinkedIn and you recently crossed, like Keshav said, 100K followers. So was that during IIM or was that after IIM, and was that during your first content creation experience that you mentioned earlier? I think for me it was during IIM, and that too during my second year when I won the first case study competition. It was
Ola cracked the case. I think it was one of the newer IIMs only. Maybe Ranchi. I think maybe it was IIM Ranchi. And I was very excited. It was the first win that the college had because I was the first batch student. So मैं बहुत excited हो गया ना. It's like कि I had an account on LinkedIn, but I was a passive consumer of content. I never actively blogged about it. So I checked like sometime back only कि मेरा पहला content कब गया था. So it was I think 2016. Okay. I had been very patchy. मतलब मैं regularly तो वैसे ही post नहीं कर रहा था उस time पे. But then it was like कि I didn't have followers also. I think maybe शायद होंगे तो मेरे को याद नहीं. But अपनी खुशी के लिए डाला मतलब मैंने अपनी खुशी के लिए डाला था वहाँ पर. So it was like that, नया campus है, you should talk about your experience. So I took it to heart. मैंने कहा नहीं, मेरे admin officer मोहंती सर ने बोला है तो I will do it. So I was very compliant towards my admin officer, towards my professors, and two very good friends of mine. So I was like कि बोला है तो ये तो करूँगा ही. So वो मैंने करा था. It got like a good response, and then I think then I forgot about it, about LinkedIn for a while because बहुत सारी चीज़ें और चलती थी. So but I think over a period of time I learned कि LinkedIn is like a digital diary entry. So you can trace down every single day how I was feeling, that basis the response that I made and the type of content that I've actually added there. So मेरे hashtag पे ही I think there are like 500 followers तो उसी पे ही होंगे अब. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे मैं अपने को भी लूँ, कंटेंट क्रिएशन मेरे लिए काम है, ठीक है. अब जैसे सो ओसामा हेल्प्स मी अ लॉट राइट नाउ. ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ मार्केटिंग फॉर माई कंपनी एज वेल. ही इज़ हेल्पिंग मी, ही इज़ कंसल्टिंग. सो ये मुझे बहुत टाइम से मतलब ही ट्राइज टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस एज सच कि मेरा काम आसान हो. और मैं डे टू डे में जो चीज़ें हो रही हैं ये बोलता रहता है तू वही बताना. मैं सोचता हूँ क्या बताऊँ, ये बोलता है कि इतना सब कुछ तो हो रहा है पर मेरे लिए वो काम है. बट नाउ व्हेन यू से इट लाइक कि इट्स अ डिजिटल डायरी कि मैं आई एम मतलब जो मेरे साथ हो रहा है बस मैं वो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन विदाउट द फियर ऑफ एक आई थिंक इन द बिगिनिंग फियर ऑफ जजमेंट भी छोड़ के अगर तुम ऐसा करना शुरू करो, माइंडसेट थोड़ा चेंज करो, तो आई थिंक यू गेट बेटर एट दैट गेम. तुम यू विल पुट आउट मोर. मतलब दैट इज ट्रू. आई थिंक कोई भी चीज़ आप डर के करोगे तो आई थिंक वो चीज़ वैसे भी आपके दिमाग में ऑलरेडी एक चीज़ डल गई है कि हाँ I might end up getting judged for it. So you might want to like tweak it a bit, might want to make it more people pleasing content, and I think people don't like safe content anymore. अब मैं क्या बताऊं ये खुद ही इतनी गाली दी हुई है लिंक्डइन को कि अब जब खुद दिखता है कि यहाँ से धंधा आता है हमें और यहाँ पे होना ज़रूरी है तो अब वो काफ़ी डर निकाल दिया उसामा ने 1 साल में. पर अभी भी आई थिंक वो धीरे थोड़ा बाकी रह जाता है ना, श्रेड्स बाकी रह जाते हैं तो जा रहा है धीरे धीरे. LinkedIn मैंने आई थिंक आई ब्लॉग्ड अबाउट इट. आई माइट rehash that blog 100K वाले पे. So it was like it's like Hogwarts. So help will always be given to those who seek for it or who ask for it, and then and are उसके बाद फिर एक disclaimer आया था ना डम्बलडोर का, and are also deserving of it. So it's like that. So I think मेरे हिसाब से तो I think LinkedIn is like a gold mine. You can find anything you want from there only if you're willing to find it out, and the fact that you're deserving of it. 100%. And just to give you a personal perspective, I've been very, very active on LinkedIn since 2 years. I've not been very active in the recent months because I got very busy in my podcast with other projects that are going on in my marketing agency. But through this journey, since exactly 2 years actually, I started creating on in 2021 August. So in the last 2 years, I've earned over more than 6 figures in dollars just through LinkedIn. And that's commendable. Yeah, and it wasn't even possible, and I was barely earning in 6 figures rupees before that. So that journey, and I'm still not successful because that's the theme of this podcast also कि यार करोड़ रुपए तो आ जाते हैं लेकिन हम सोचते हैं यार इसने करोड़ रुपए कमा लिए, करोड़पति बन गया, अब ये सक्सेसफुल है. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट करोड़ रुपए के साथ साथ करोड़ कॉस्ट भी आती हैं. And it's a net profit that counts. Yes. That's why a lot of people also advocate for that. Your high income does not mean wealth.
Absolutely. And- How you manage Exactly. that money is what's going to You make you create wealthy wealth. or not. Exactly. You create wealth. It will never come कि Yes. यार मैंने 20,000 रुपए बचा लिए थे 1 लाख रुपए से इसलिए मैं wealthy बन गया. Hmm. It's how you use or reuse your resources. It's not just money, it's your time also. Yes. Let's say if you Efforts also. have a 9 to 5 job, but you also have a skill that you're really passionate about. So Yeah. you say यार मैं 5 to जो rest of the time है in the day, you'll spend that doing something of your own. So that's something that you're investing in, right? It's not money, it's your time, it's your Absolutely skill. true. So Absolutely true. that worked really well for me in my favor. So that's why I keep advocating to him also. यार कि कर कुछ तो कर, ऐसा हो ही नहीं सकता. If you start from zero, you will never be at zero. Displacement Yes. zero हो सकती है, distance zero नहीं होगा. So regardless of where you are, तुम्हें लगे कि तुम्हारे 100 impression आ रहे हैं, लेकिन वो 100 में से भी तुम्हें तो एक बंदा चाहिए ना. हाँ. तुम्हें तो एक क्लाइंट चाहिए. तुम्हारा एक क्लाइंट देख रहे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है 100 impression आ रहे हैं, 1000 impression आ रहे हैं. Impression वाले तो गेम ही नहीं खेलना चाहिए. You should focus on intentional content rather than Absolutely true. just किसके creating लिए content बना for- है, Exactly. क्यों बना है, वो Exactly. ज़्यादा ज़रूरी है compared to उसके बाद. And help But people do people. chase numbers. हाँ, वो That is a reality. I think most content creators do that. exactly. They are chasing numbers. That's not a long-term game, man. Then I think these are they- virality spikes. Then Yes, but I think if it works for them, I think that's great. so even the likes of Tanmay but suffered through it, right? Like your peak or your spike could last for years also. But Yeah. that doesn't mean that it won't come crashing down. Yes. I think Yashraj Mukhate, I think he Yeah. abhi and new. They've been consistent. Think school. I think if you're like consistently delivering quality content, I don't think so that that's ever going to be a challenge. Exactly. You just build a SOP around it and then you Exactly. know that it works. So I think it's like clockwork. कि you know that this is how it is going to work and then you know you bring in some dynamism कि कोई नया content format introduce कर दिया, कोई नए तरीके से आपने content present करना शुरू कर दिया. Right. So maybe the packaging can change but the core will always remain the same and that is that brand that they have built. Exactly. वो systems problem है. System build कर दिया तो your life becomes easy. Absolutely. And people don't understand this about personal branding, that एक तो you can't invent a new personality for your online self. Yeah. You have to be actually Authentic. exactly authentic, but you also have to try to be interesting in real life. Only then you will be realistic or Absolutely true. interesting online. ऐसा केशव को मैं कितनी बार बोलता रहता कि यार भाई तू जो बातें ऑफलाइन करता है, you just have to take that online. कैंसिल कर दिया तो किसी ने. अरे वो उनकी प्रॉब्लम है यार. That's not our problem. If someone gets, you have to risk being offensive at the cost of being right. So मतलब you trying to help one person. I think on a specific platform, their trust and safety teams could have an issue. Yeah, but And his profile could get disabled. we're not saying something like that, right? We're saying I'm just saying- थोड़ा तो मैं दिमाग लगा ही लूंगा कि कितना politically incorrect होना है. वो I think you don't know, like you know there are people who might troll you. नहीं, That's ट्रोल fine. से That's तो fine. बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. मजा आता आदमी है यार. अच्छा, मतलब इतना ट्रोल से डरने लग गए तो Troll जाट से निकल आ problem जाएंगे. प्लेटफॉर्म से धक्का दे के ये ना बोल दे कि कुछ कैंसिल करने से ना थोड़ी करियर वेरियर खराब हो जाते हैं, तो वो ना हो. एज लॉन्ग एज उतना नहीं हो रहा Yeah. ट्रोल से तो. Even then, that is a wave that you can ride to your advantage. हाँ. Like a lot of people are cancelled, and some people ride that wave, and some people get consumed by that wave. Right. So it also is how you deal with it. If you let It's it It's the get to you- crisis management part that needs to get. Yeah. Exactly. And तुम्हारा अगर वो क्या कहते हैं पैराशूट वो सही है, तुम्हारा सॉर्टेड है, तो यू विल सर्वाइव. मेरा टेक अवे है कि अगर क्राइसिस क्रिएट कर पाया तो मतलब कुछ तो ठीक किया है. हाँ भाई. और मतलब you We've all had trolls. We've all had good and bad days. मतलब you हाँ, can't ये जैसे please everyone. ग्रोथ स्कूल में हम पढ़ाते थे तो सब आज भी है. तो हमने क्या किया हुआ है, कंपनी के स्लैक में हमने एक चैनल बनाया हुआ है स्मॉल विंस, विच इज़ फॉर हमारी कंपनी के जो छोटी छोटी विंस हैं, इंडिविजुअल्स जो डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं, डेवलपर्स, तो वो अपना स्मॉल विन वहाँ शेयर कर सकें. तो मयंक हु इज़ माई को फाउंडर, उसने स्क्रीनशॉट डाला था. हम एक वर्कशॉप ले रहे थे साथ में, 2 साल पहले की बात है, वैभव के साथ. तो उसमें एक बंदे ने आके गाली लिखी कुछ तो, ठीक है, तो मैं बाद में स्क्रीनशॉट अगर डाल सकते होंगे तो डाल देंगे. उसने कुछ तो गाली लिखी और हमें इतनी हंसी आई और इतना मज़ा आया उस बंदे की बात सुन के. हमने वो स्मॉल विन में डाला कि भाई हमें गालियाँ मिल रही हैं. पहली गाली तो वी टुक इट लाइक कि ये सर का ताज बना के रखेंगे इसको, तो इस चैनल में डाल के हमेशा याद करेंगे. और हर थोड़े महीने में कोई ना कोई उसको याद करके वो फिर से आगे ले आता है थ्रेड को कि ये एक स्मॉल विन था. तो But ट्रोल्स के perspective. साथ मतलब वी हैव If you फन. let it get to you, then of course it will hurt. And
but you have Need to to keep grow it- a thick skin. Exactly, you have to grow a thick skin, and you have to be wary of that you can't please everyone. Some people will speak against you, and that's fine. You have to risk that in Absolutely order true. to build something for yourself. ऐसे तो मतलब ये बात होगी ना कि मैं एक प्रोडक्ट बना दूं, मैं बोलूँ कि सब लोग खरीद लेंगे, कुछ लोग नहीं खरीदेंगे, कुछ लोग गाली भी बकेंगे, लेकिन जो लोग खरीद ले मैं उनके लिए बनाऊंगा ना, वो लोग तो खरीद रहे हैं ना, राइट. तो आई विल बिल्ड अ मार्केट फॉर यहाँ देम. आ गया ना अकाउंट बेस्ड मार्केटिंग. So you now you know promoter को क्या दिखाना है, detractor को क्या दिखाना है, Exactly, passive को क्या दिखाना है. Exactly. But yeah, and so you like create मतलब some posts that I saw that you share your case studies or your thoughts on some market breakdown, brand breakdown, right? So do you like doing that, or do you do that for virality? I would say I have loved doing that for a very long time. So whenever I would read a case study, I would always break it down just like the way I put that post. So it came very organically to me कि मतलब people always talk about the good part, but they might not talk about मतलब brand क्या है अगर आपने campaign के बारे में नहीं बताया, origin नहीं बताया, financial health के बारे में बात नहीं करी, जितना post का length allowed है 1300 words, I try to optimize it. People are like LinkedIn पे वो लोग भी हैं जो एक लाइन डाल रहे हैं, then also they're going viral, right? But that's the genre. I can't be a brand builder if I can't even deconstruct an existing brand and then talk about what worked or what not worked, or actually maybe some area of improvement or something around those lines. So it's like चाहे vintage brand / legacy brand, new age brand, startup, a specialty brand. Now you put another layer of the industry, right? You put another layer of geography, तो वो और ज़्यादा it's like you're एनरिच हो जाता है और हाँ. So it's like for me जैसे कुछ लोगों को खाने को देख के एकदम they feel foodgasm. So when I look at a brand case study, I get a mindgasm. So it's like it's almost like that. Where are the channels from where you consume? कौन से publications हैं जहाँ से I refer multiple. So Can it you could name be a like few? one of, so it could be Outlook, it could be ET, it could be the official brand handles, उनकी websites, उनके annual reports. So जितना IIM से तो बाहर निकल गए हो, लेकिन IIM आपसे बाहर नहीं निकला अभी तक है. वो निकलना भी नहीं चाहिए. वो निकलना भी नहीं चाहिए. वो तो USP है. USP निकल जाएगी तो बहुत लोगों को निकल जाता है. People are not so passionate about the way that I am. So I come from a very humble IIM. So I know कि वो 0 to 1 की जर्नी जो हुई है उस कैंपस पे, I think I'm the biggest cheerleader. मतलब पोस्ट भी आता है ना, मैं उसमें कमेंट और लाइक जरूर करता हूँ on LinkedIn if it shows up on my feed. So I always keep a tab. जब भी NIRF रैंकिंग आती है, जब भी कोई इंटरनेशनल रैंकिंग आ रही है, कोई भी कोई करंट बैच का किसी का अच्छी प्लेसमेंट लगी है, तो I always ensure that all these wins and everything are I am up to date about my college. And for all three of the institutions that I'm from, I think each has had a very significant role to play in my life. So I can't be somebody who's ungrateful and then just wash off my hands and then move ahead with my life. पर तू ये देख रहा है देवन का लेवल क्या है? He's saying humble IIMs. That is so funny. The older IIMs तो के सामने तो वो humble ही है ना. मतलब हम लोगों ने तो I was in a transitionary campus, Silicon Institute of Technology, Sason, जबकि वो है IIM Sambalpur, but I was like 15 kilometers outside of Sambalpur. So it's like यहाँ से या तो आप रायपुर जाओ या भुवनेश्वर जाओ, वहाँ से फिर आप ट्रेन लो या कैब लो, फिर मतलब it was like a proper 10-hour journey that I had to cover from Delhi, from here, the heart of the country, to some remote place in Odisha. So it was like that. But then now things have changed so drastically that they have their airstrips. So that same journey can now be covered in 2 hours, which I used to spend like 10 hours on. Right. So it's like ट्रांसपोर्टेशन वालों का काफी नुकसान हो गया सेक्टर के अंदर. वहां पे जो थे बच्चों का तो फायदा हो गया, लेकिन बच्चों का तो बहुत फायदा हो गया. राइट. They have all connecting flights that you can think of, and the exposure, their entrepreneurship cell, everything, including their latest placement reports. पोटेंशियली मेरा पहला करोड़ भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज हो सकता है. बिल्कुल. फॉर देम इफ यू आर एबल टू ब्रिंग गुड गेस्ट. पर वो हमारे ऊपर है फिर कि हम क्वालिटी अच्छी बाद में नोट्स लेके जाएंगे. दैट व्हाट डू यू लुक फॉर व्हेन यू रीड अ गुड केस स्टडी? हाउ डू यू, राइट, तो वो क्या इंफॉर्मेशन पीसेस हैं जो कि हम लेके आ सकते हैं लोगों की जर्नी से? तो प्रोबेबली हाँ श्योर.
On the subject of like posting on LinkedIn, no, there's this guy called Rajat Taneja. Okay. So भाई वो LinkedIn पे shit posting करता है. I have to give it to him that he's doing a really good job at it. उसकी bio है X this X that. मतलब it's making fun left, right and center of all the LinkedIn people that people look up to. But he's doing it in such a way कि बुरा नहीं लगता देखने में. He's like very harmless jokes कि मतलब he's right. Sarcastic humor है. Exactly, and it's very Sarcastic funny. मैं humor सोचता का- था पहले कि मैं ये करूंगा जाके लिंक्डइन पे, Right. काफी साला लोग वो कर भी रहे नहीं हैं. किया I know a यार। lot of people who are doing it. अब तो ये हिप हो गया होगा। हाँ, but I really enjoy his content यार. मतलब he's very, मतलब वो offensive, he's on borderline offensive, but वो इस तरीके से बोलता है कि बुरा लगता ही नहीं है कि मतलब it's really funny and the way that he's doing it is But great. उनसे पूछो जिनके बारे में बोल रहे हैं. नहीं, वो किसी के बारे में नहीं बोल रहा. That's the point. He's talking about the general trend वो mostly. जनरल चीजों के अच्छा, बारे में अच्छा, करता okay, है। So let's Got say, it. for example, if he's saying X this, X that, people write X Uber, X like Microsoft, and something. I never really got why people do that. It's It's for like being keywords. associated with your former girlfriends or. But it's for keywords. It's like that's what Web of Society also कुछ teaches. लोगों in का the- तो experience भी अच्छा होता है यार। वो तो you've already added in your experience ना, वो कीवर्ड तो वैसे ही नहीं, plug अगर है आप profile में. टाइटल्स यू हैव अ उसका फिल्टर. प्रेफरेंस बढ़ता है, बट देन हाँ. इट्स लाइक कुछ मैंने एक दो लोगों के प्रोफाइल देखे तो उन्होंने पता नहीं सारे एक्स ही डाले हुए थे. मैंने कहा तो फिर करंट कौन सा है? वो ढूंढना पड़ता है. वो ढूंढना पड़ता है. नहीं So नहीं it ये becomes- बट आई थिंक वो रिलेशनशिप की बात होती है। जैसे हम ये साल जब शुरू हुआ था तो हम सोच रहे थे कि वेयर डू वी वांट टू टेक आवर कंपनी दिस ईयर, या फिर Yeah. क्या हमारे गोल्स हैं, और हम थोड़ा सा बड़े लेवल से रिस्ट्रक्चर करके वी वर फोकसिंग ऑन अ फ्यू थिंग्स। तो उसमें कुछ चीज़ें हम लिख रहे थे कि एक जनरल गोल क्या है इंडिविजुअल्स का। तो मयंक ने लिखा कि, एंड मैंने भी लिखा था वो चीज़, मैंने डिफरेंट वे में लिखा था बट उसके वर्ड्स एग्जैक्ट थे, दैट आई वांट टू बिल्ड अ कंपनी जो कल को कोई स्टेप अप करके किसी और जगह भी जाए ना, दे वांट टू राइट आवर नेम Yeah. एज एन एक्स ये। Got it. तो वो रिलेशनशिप भी फॉर्म करने में हमें हेल्प करता है, दैट वी डू राइट बाय आवर एम्प्लॉइज एंड द टीम कि लोग करें ऐसा। तो आई थिंक मेरे लिए तो अच्छी चीज़ होगी अगर कोई कल को एक्स एपिक लिख रहा होगा तो। मैंने तो कभी अपने पिछले एम्प्लॉयर्स का नाम नहीं लिखे उन टाइटल में. Never have I done that. हाँ, मैंने भी नहीं लिखा. बट इट्स जस्ट मतलब लोग लिखते हैं, इट्स फनी एंड इट्स माइट बी वर्किंग फॉर देम एंड हु आर वी टू जज. Definitely, हाँ. I think people do derive something out of a brand हाँ, equity एग्जैक्टली. जो already built है. होता तो है यार, गूगल का नाम सुन के थोड़ा तो आंखें चमकती हैं लोगों हाँ. की। तो मतलब मानो ना एक मानो, सबलिमिनल इफेक्ट तो पड़ ही जाता है कुछ ना हो तो. वो तो एक लेवल पे पहुंच जाओगे तब तुम्हें रियलाइज होगा कि यार सब सिमिलर ही है। गूगल में काम करने वाले भी कोई शेख चिल्ली नहीं है, यू आर प्रोबेबली स्मार्टर देन द पर्सन। They just have a smarter approach. हाँ, बट 90% ऑफ द पीपल विल गेट वूड बाय दैट, हाँ. एंड दैट इज हु इट इज फॉर। ठीक है यार, सो आपके 100K फॉलोअर्स हैं, 1 लाख लोग आपको लिंक्डइन पे देखते हैं, आपकी चीज़ें कंज्यूम करते हैं। डू यू नो हु दीज पीपल आर एंड वाई आर दे लुकिंग फॉर योर इनसाइट्स, या जो भी आप शेयर कर रहे हो, हु आर दीज पीपल? I think not every single person I think I हाँ might नहीं, not be knowing. दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। Right, but I do check the insights periodically, find out कि कहाँ से ज़्यादा किस तरह की इंडस्ट्री के लोग हैं, what is their age group like. So I do my own hypothesis testing, and just like it's pretty much similar age group where whatever issues I might be having, I might be knowing people who are undergoing a burnout, corporate burnout, relationship burnout. So I उसको देख के ही फिर then I added कोई नहीं, उसको देख के then I started adding content around mental health and burnout, and then how do you manage it better. एक छोटा सा मैंने community भी बनाया उसके लिए where I share almost not maybe on a daily basis, but every 2 days I maybe share like a quote with the reminder that you're on the right track. So it's like almost like a motivational booster for them, right? And then hashtag DBites I started working on ever since I've been on LinkedIn. Ki, there should be one hashtag which is very personal and private to use. I took my initials DB और उसका के bytes का पूरा बना दिया, and then that's how it was. Majority of the folks are from B schools or they want to get into B schools, right? So that is one area which I think I've been catering to of late. And then obviously engineering schools के students भी हैं, since I do like a lot of events on campus and virtual events also. So I think वो वाली एक community भी एक build हो रही थी, and then they start feeding to your
LinkedIn and Instagram and they start consuming your content. So that is there. बाकी जो इंडस्ट्री में peers हैं, सीनियर्स हैं, mentors हैं, former peers. haters Haters would be in followers then. अच्छा ओके मतलब कनेक्शन नहीं होंगे I doubt अच्छा कि connection में होंगे. और Okay. फिर then there are obviously those people also who are on your LinkedIn but they would never like your comment or like or comment or share. So they are just there to see what you're up to. That's ये it. पता है आई एम प्रोबेबली फ्रॉम दैट कैटेगरी कि आई डोंट लाइक और शेयर ऑन पर्पस बट जैसे इंस्टाग्राम लिंक्डइन फेसबुक जब से ये एडवेंट हुआ है सोशल मीडिया का मेरी कभी आदत रही नहीं कि मैं किसी चीज़ को लाइक करूँ आउट ऑफ हैबिट नॉट बिकॉज कि मुझे ये पसंद है तो मैं लाइक करूँ नहीं पसंद तो ना करूँ आउट ऑफ हैबिट वो हैबिट मैंने कॉन्शियसली चेंज करी है लेटली सोशल मीडिया पे करने में पर मैं उसमें फॉलो करूँगा कि मैं कुछ भी लाइक वाइक नहीं करता बट माई क्वेश्चन वॉज लोडेड व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज बिकॉज आप एक सर्टन पेडेस्टल पे पहुंच गए हो आपने वो पूरी जर्नी देखी है ज़ीरो से लेके यहाँ तक की एंड उसामा तेरे से भी ये क्वेश्चन कि इट इज़ सेड कि यू नीड टू आइडेंटिफाई हु योर ऑडियंसेस एंड उसके हिसाब से तुम कंटेंट बनाते हो बट अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है मतलब आई एम एट ज़ीरो लेवल ज़ीरो अपना काम कर रहा हूँ कुछ मेरे को आता है या पढ़ाई कर रहा हूँ आई डोंट नो वट एवर यू आर डूइंग आपके पास नहीं है वो इनसाइट सो हाउ डू यू स्टार्ट फ्रॉम डे ज़ीरो वो कैसे करते हो आप I think how I started from day zero was primarily like एक सेकंड माइक थोड़ा आगे करना है ठीक है so I think how I started from my day zero was कि student at an IIM how a day in my life looks like. अच्छा So मैंने जैसे स्टार्टिंग में ये बात बोली थी that you know it's almost like a diary entry Diary. for me. हाँ So I've always maintained it like a diary entry. Something that I read, found it interesting, I blogged about it. As simple as that. So for me, it is a diary entry. हाउ मच टाइम डज इट टेक यू इन अ डे अगर ये क्योंकि आप कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करते हो कितना थॉट मतलब आप थोड़ा प्रोसेस बता सकते हो कि कैसे करते हो ठीक है आप I basically know कि you know X number of sources that I should be reading, be a much more informed person, check the latest updates if I'm doing like a brand content, and then you know maybe do like a storytelling on it. Okay, so I kind of know my format, how it works, right? Sometimes I also design my own thumbnails, the creative that needs to go. उसका एक consistent visual branding I have established कि हाँ ये है इस तरीके से काम करेगा. If it's someone that I've been inspired by as an individual, then I blog about them. So Mr. Harsh Mariwala, Aman Gupta are some notable examples. So I would definitely talk about it because journey उन्होंने 0 to 1 क्या 0 to 1000 1 lakh भी देख ली है. राइट So it's like that. They've built empires, worked against odds. Specifically, I think Mariko के जो head हैं, for him, I think it's been like that. I blogged about it, and then people from his office, his own son, engaged with the content. V-Guard Industries, very inspiring journey. Amazing founder. He's a philanthropist also. He gave his kidney to a bus driver. Oh, So people don't do that. who's the person? V-Guard Industries के जो अब he's in the leadership team जिन्होंने start करी थी. Okay. तो उनके बेटे ने वो रीशेयर करा था and then it had like उनके रीशेयर पे I think there were like 500 odd likes Okay. and that post had gone viral. So it's like there are so many things that people don't know about. Zoho के जो founder हैं very simple man. Yeah. So I think मेरे को इनसे ये सीखने को मिला है कि the best mark of somebody who is successful is that they are humble and then they have a network effect to them. That if they say that this is a promising an upcoming startup or this is a upcoming content creator, it's a big vote of confidence. Right? I think just like how Mr. Ratan Tata is respected left, right and center by every single person in the country. You don't you basically can't buy it. Yeah, It's earned. Right? So I think that's a big mark of it's a hallmark of success. Ki how people are talking about you in your absence. So for me, I think that's like a basic qualifier. So if I'm writing about somebody, I would definitely want to do complete justice to it. जितना best उसके बारे में I can research, I'll do it. Okay. So that's also I basically do batching. जब भी मेरा time हो, I create a couple of pieces, and then I plan it accordingly. Daily, I think it would be very difficult to create content. मैंने ये भी try करके देखा बीच में like 2 weeks back.
similar frequency, but then I was like कि life थोड़ी easier है if I can do it Batch it. over a down day, क्योंकि it's like Saturdays or Sundays. Otherwise I would be sitting up at 9 p.m. and then reading about, and then you're like कि अगले दिन सुबह जिम जाना है, अब मैं थक गया हूँ, मेरे को काम करना नहीं और, राइट. so तो then try to wrap up the day by 10, 10:30, 11. जनरली आप वीकेंड पे यू स्पेंड सम टाइम, जो भी Yes. आपने पूरे हफ्ते पढ़ते ही रहते हो, फिर उसके बाद उसको Most creators do that. जो full time creators हैं उनके पास तो सारे दिन ही उनके, हाँ उन्होंने वो अपनी तो लाइफ ऐसी बना ली है कि they can shoot like that and then they can lead a life like that. So Right. a full-time content creator and somebody who's pursuing content on the side are two very different yeah, scenarios. yeah. It's much harder to create content on the side, and it's even more harder to create content for a living. So, Yes, I was about to add to that. So I think वो pressure बहुत अलग होता है. right. So it just takes out the, like, if it starts feeling like work, then it becomes less creative for some reason, And then more you get robotic. and it becomes you get a creative block. So I write for like I help people build their personal brands on LinkedIn. That's And very nice. I have been doing that for over 1.5 years now, and that's how I basically earned my major chunk of earnings that I've earned so far. But the point there was that I was able to build a better brand for them than I was able to build my own, because circumstances हो सकते हैं, credibility हो सकती है, 100 चीज़ें हो सकती हैं, but the idea is that when you look, जैसे आप अगर किसी का brand audit करोगे ना, you'll be easily able to identify the areas of creative development. But for yourself, you're just like, ये ऐसे ही वैसे, या आपने ऐसे बोला कि यार मैं थक गया, छोड़ो अपना तो कल कर लेंगे, आज नहीं हो तो कोई बात नहीं. नहीं वो immediate next दिन का content को लेकर नहीं मैं थक सकता. नहीं मेरे साथ वो हो जाता मैं अगले हफ्ते के मंडे के कंटेंट के लेके हो Right. सकता है एक पिछले हफ्ते के वेडनेसडे पे थक गया हो. है. Right. मैं बोलूंगा चलो ये तो मैं बाद में कर लूंगा, बट Right. आई डोंट लाइक अगले दिन है तो देन आई विल बी अंडर प्रेशर कि हाँ मेरा कंटेंट रेडी नहीं है. So you do it every day, मतलब कुछ हर दिन जाता ही जाता है. How do you, like, what's the So of late it's been like frequency has been almost every day. Depending upon my commitments, might not go if I'm taking some sessions. Maybe Saturday को maybe I'm not able to post, or Sunday को I'm not able to post, या weekday में एक दिन ऐसे हो गया कि मेरे से मिस हो गया. So I try to keep it like 5 to 6 pieces at least in a week, because my content has 3 different unique flavors to it. So one is definitely around brand and marketing. Then the other one is if I have always been inspired by civil servants and army people, because I've been surrounded by them, so I've always been very motivated about it, because people take them for granted, almost taken for granted वाले roles हैं. Somebody at the border, but आप देश में लड़ मर रहे हो. Civil servants को आप बाबू बोल देते हो, but you don't know what challenges they Yeah, face, or no. whatever they are doing. ठीक है. Have you tried for the UPSC exam? I really wanted to do that. अच्छा. I really want to do that, but single child, no buy-in from parents. And I was also like, I didn't get the time because I left college, and within a year's time I went for my master's. और बीच में work experience था. Right. So it was like, where is the time? I was thinking of giving one UPSC interview for an assistant labor commissioner, but I was already on campus और center Delhi डाला था, तो मैं भुवनेश्वर से तो दिल्ली नहीं आ पाता उस समय इतने शॉर्ट नोटिस पे. बट दैट वाज लाइक, मेरे को लगता था, मैंने कहा कि हाँ ये होना ज़रूर चाहिए. अब नहीं दे सकते, उसकी कोई एज लिमिट होती है? नहीं, it's like now obviously I'm into this, so obviously I can't get into that. It's like restarting from scratch and doing something. So it's like working with those people in some capacity, and then trying to drive impact at the grassroots level, how much whatever I can in whatever capacity I can. So definitely that is something that I would be really happy to do. And to an extent, I think I know a couple of civil servants as well, and army people have always been a part of my life, so I'm kind of always motivated to talk about them. And then the third one is around mental health, or people working professionals and students जो face करते हैं. So it's like बहुत सारे pages के ऊपर ही मैंने ये चीज़ देखी है. People, for me, my first semester was the toughest semester that I've ever had. At IIM? Yes. I was almost at that verge that maybe this is not made for me. Why? क्या हुआ था? मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने के लिए बोला गया था, और इंजीनियर्स
by default can't do much with that. So you're like, you're learning from scratch कि ये या इस साइड पर हाँ. जाएगा, इस साइड पे एंट्री होगी, ये डेट है, इक्विटी है, ये यहाँ पर बैलेंस होगा, यहाँ पर अरे फिर बाद में जाके बैलेंस क्यों नहीं हुआ बैलेंस शीट. तो इट वाज लाइक एन इम्बैलेंस शीट फॉर मी. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि यार क्या करना है, कहाँ गलती हो गई है, क्या कंपोनेंट कहाँ गलत चला गया. बट थैंकफुली आई थिंक ग्रेड पॉइंट्स जो हमारे होते हैं CGPA, दोज वर ऑलवेज एट आई वुड से 3.2 out of 4.3. So it was like I would always be in the top 10-15 percentile Okay. उन सब्जेक्ट्स के अंदर which I used to consider as my weakness. Right. It was only cost accounting का एक सब्जेक्ट आया था which put the final nail in that coffin, and that was कि finance is not made for me. Because मैंने एक बार क्लास में ये भी बोला था, मतलब मैंने कहा कि ये आपके क्वेश्चन थे, ये आंसर है, I am feeling very sleepy, can I please go back to my room? क्या बोला टीचर ने? He was okay. I was kind of scored that much and I wasn't feeling well, so he's like कि rest it out. ऐसा कुछ था नहीं. So I want to cover one point that we all hear about, and I know that you had your talk at DSC yesterday, and you have been on TEDx as well, among other platforms for public speaking. But we all hear that ये बंदा TEDx पे गया, वो बंदा TEDx पे गया. But what is the process of going to TEDx? Like, how does it I work? think TEDx is invite only. Okay. Who At can least invite you? I am the curator. Maybe you get nominated Okay. by somebody. So I got nominated by my faculty member. By a an time ago. already TEDx speaker. No, it could be like कोई हो सकता है कि जिस कॉलेज में हो रहा है उनकी कोई प्रोफेसर nominate your name who So by are a chairing senior. that. Yes. So or maybe there's an outreach and they see your profile and you're doing good work, and then the curator team, they reach out to you. Okay. या at least जो सही तरीका है मुझे वो मालूम है, मुझे इसके अलावा और कोई तरीका नहीं पता how people get Okay, invited to okay. TEDx. So for me TEDx is always an invite only, Right. just like Josh Talks is, or just like you just name any other platform. Right. It's like that. Okay. And I think you have a very extensive experience in the e-commerce industry, right? So just wanted to understand that, is it still a profitable or viable business idea in 2023? I think definitely yes. Okay. If you have the right product market fit, it is going to be. What are some good product ideas that you think could do really well in this coming 6 months? I think okay, I think 6 months. This तो year, बहुत the leftover year. Maybe you can talk about the fiscal year. Fiscal year 23. probably. So मतलब at Sure. least I have nine months to work with. 9-10 months to work with. I think overall अगर देखा जाए, I think maybe it's the D2C space. You identify your niche. I think food tech, if you're doing something around that, which can be scaled and is asset light. Asset light is the word that is underlined in red or bold भी कर दिया मैंने, because usually it's like कि we are spending X amount of money to generate X by 10 amount in revenues. फिर profit तो फिर कहीं exist नहीं करेगा. But I think there are certain business models which need some time to get tested out, and then only they can get replicated. So I think from my understanding, I think health is a booming space. I think AI, again, it's a huge booming space. Creator economy is booming. So I think anything that is serving as an enabler or serving as a direct touch point for the consumer is going to do really well. Okay. Right. But whatever it is, it should be in a hybrid format. Never to lay all your eggs in one basket ki kal ko you don't know what a global macroeconomic trend like a COVID did to so many businesses who were not digitally agile. So रातों रात आप अपना business जो आप offline कर रहे थे वो फिर आपको transition करके online लेके जाना पड़ेगा. Right. So that has its own time, but that is a lost time because you could have made money had you had that channel up and running. Right. वो सेटअप करने में ही आपको 2-3 महीने लग जाएंगे, तो वो तो आपका कंपेटिटर नहीं तब तक मार्केट के अंदर आपका फ्लैंक तो तोड़ के आगे ले गया ना अपना मार्केट. सो दैट इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर योर ब्रांड. Those are some very good points. So what would you say are 5 things to keep in mind
if anyone is starting an e-commerce business in today's day and age, any learnings that you've had so far that, yeah, if I knew this when I was starting out, or when someone I saw was starting out, they would have known this, they would have done a better job. Okay. I think is that more with respect to an employee or more with respect to somebody who wants to build a business? Who build wants a to build a business. business, but Who a wants budding to- entrepreneur. अबडिंग entrepreneur. I think सबसे पहले तो एक चीज़ का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है ये कि नॉट फ्रॉम अ रिसोर्स कैपेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपको पता है कि यू हैव इट्स अ बूटस्ट्रैप्ड startup, right? Mhm. So have goals which are more in sync with that reality, and then celebrate every single win, and then work towards optimizing and plugging the gaps that you know exist, not that you feel exist, Very true. right? So there is a huge difference between expectation and reality. वो check होना बहुत ज़रूरी है. Second है your initial team is supposed to be are supposed to be those people who share that vision with you. But do you need a team for an I e-commerce? think there are things that एक single इंसान नहीं कर सकता. So maybe you need at least 2 people more, maybe 1 more person, because you always need second opinion. Right. You need to know that, is there another way to look at this problem? Is there another lens that you need to look at it from? Usually एक इंसान है, and if they're just unidimensional or 2D, but उसके बीच में अगर एक third dimension कोई और इंसान अगर add कर सकता है, maybe a founding member, maybe somebody who's more on the support side of things, who knows the ground reality, who's working at the grassroots, they will be able to give that value to you, जिससे कि आप सही टाइम पर अपना बिजनेस का पिवट कर सकते हो, rather than heading towards a burning train, like towards a train wreck. Right. So I think that is very important. Ki there is so that's the second thing in terms of where when you're getting those people, it is really required. So now with your case, I think that there are 3 people working together. कि मुझे इतने एपिसोड तो करने ही हैं और ये चीज़ होगी ज़रूर, right? But then there are those people who just burn out and like कि 4 उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली, उसके बाद they need instant success, but it doesn't work like that, right? Everything needs time and effort. Business रातों रात नहीं बढ़ेंगे, business empire रातों रात नहीं बनेगा. Very true. Civilization रातों रात नहीं खड़ी होती, right? ना ही brand खड़े होते हैं. I'll ask you a very interesting question based on reality, some reality that we know, like especially thanks to Shark Tank India, we know that there are some brands, Mama Earth, Sugar, that are run by, if I'm not wrong, they were founded and run by couples, husbands and Yes. wives. So do you think it's a good side project to have as a married couple, to have a e-commerce venture of your own, just to see if it works or not? I think it's really good for them if it worked out for them. But there was this very interesting conversation that happened in one of the IIM groups, where it was mentioned that people get split because of the rifts that spill over from your professional life to your personal life, Okay. right? And then there are so many decisions which should be resolved behind closed doors, but then it becomes like a public. It's like washing dirty laundry in public about your personal matter in a boardroom. Right. मैंने सुना है, मैंने कभी देखा नहीं है सब चीजें होते हुए. It can easily happen. Yeah. It's all about hearsay, right? So I think if my to-be spouse is also more charged at getting into something with me on a professional front, I would be more than willing to give it a try. Always give it a try. I think वो एक चीज़ है, तो वो तो founding team का ही part हो गया. So there were 2 things that we discussed. I think the third most important factor is that you need to know कि ये product market fit exist करेगा, right? So because usually it's an illusion. Which is also known very classic. It's a classic reading material, which I think is one of the best in marketing, also known as marketing myopia. Okay. So it's like कि short sightedness आपको बहुत सारी चीजें देखने नहीं देती, right? So how do you overcome that? So you need that reality check, जो कि हो सकता है आपका customer, stakeholder, employee, सब लोग मिलकर आपको शायद वो bigger picture दिखाएं कि आप fit कहाँ होते हो इंडस्ट्री में. Right. There are very classic examples where good brands could not see what was coming up. So all analog brands, for that matter, were not able to foresee
कि digital phones, digital cameras, Hmm. digital camera वाले phone, Hmm. some very, I won't take names, but then those are like classic case studies which we have read, Right. right? So it's there. The fourth most important thing is customer needs to be given priority. Right. It's not the other way around कि मतलब मैंने जो बोला वो जो कह दिया ना बस कह दिया, हाँ. वो नहीं होता है. Right. ठीक है, कस्टमर जो बोलेगा वही रियलिटी है आपकी मार्केट की. Right. Customer ठीक है, जय सो बच्चन कस्टमर ने. के ऊपर एक फोकस होना बहुत जरूरी है. Right. ठीक है. एंड फिफ्थ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लीज इट्स ऑलवेज वाइज कि जितनी जल्दी फ्रॉम डे जीरो यू आर आउटकम बेस्ड. Right. अगर आपको पता है कि आपका एंड रिजल्ट ये है कि ये आपका आउटकम है, तो आप अपने प्रोसेस उस हिसाब से डिजाइन करोगे. Right. विद द एब्सेंस ऑफ अ प्रोसेस दोस आउटकम्स कैन नॉट बी रीच्ड. Hmm. वो फिर फ्लूक के बेसिस पर होगा विच यू कैन नेवर रेप्लिकेट. यू विल नेवर नो व्हाट वर्कड, व्हाट डिड नॉट वर्क. सो यू नीड टू नो कि कौन सा कैलिब्रेशन किस लीवर पे लगेगा, किस तरीके से आपने वो जर्नी कवर करी थी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टू सी. एंड देन एट द एंड ऑफ इट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमेशा मेट्रिक्स पे फोकस करो जो कि आपके प्राइमरी हैं. देन as your business matures, add a tertiary, add a secondary, then add a tertiary metric also, so that your team is also incentivized कि यार if we perform this is going to work for us, as an individual, as somebody who's part of a team, as somebody who wants to aspire and get into the leadership team, and as a business also. So the industry needs to grow. मुझे बस एक चीज़ पूछनी है लास्ट में कि what is the dark or harsh reality of IIM that not many people you see talk about? And it could be something like it's probably not good for someone if they are coming from a certain mindset or background. They will not be able to benefit from it, and they will just be disappointed. Yeah. So and that's, and if you like, I'm not saying this is the case, I'm just giving an example what kind of things that you can beware people of. And it's not about bad Oh, I mouthing. have an answer to that. Please do. I absolutely have an answer to that. और अगर कोई IIM की gossip है तो that I would be more than happy to know. Gossip का तो I think उससे ज़्यादा तो I think it's the perception that people come into any campus with कि यार हम IIT IIM में आ गए, everything is served on a silver platter, नौकरी तो लगी जाएगी. But that is not the reality, because you're sitting with one of the best minds of the country. ठीक है, वहाँ पर भी वो बेल कर्व बनेगा. ठीक है, आप टॉप परफॉर्मर हो, मिडिल ग्राउंड पर हो या लैगार्ड हो. ठीक है, उधर भी ABCDEF ग्रेड्स आएंगे, सबके सामने आएंगे. ठीक है, आई हैव सीन पीपल रिपीटिंग अ ईयर बिकॉज उनके it wasn't because of the grade, but they've met with a personal accident. So that was one of the reasons. Some also were on the verge of repeating a year, right? So I think your biggest takeaway should be in terms of the education, the opportunity that you have been given, to grab it with both hands and not let your ego stand in between, because या तो ego होगा या तो knowledge होगी. खाली बर्तन खड़कते हैं, भरे हुए बर्तन नहीं खड़कते. ठीक है, आम का पेड़ हमेशा झुका हुआ ही रहता है बिकॉज उसमें फल लदे होते हैं. बट दैट इज नॉट द केस विद एनी अदर ट्री, मे बी अ पाइन ट्री. उसका पर्पस अलग है लाइफ में, इसका पर्पस अलग है लाइफ में. सो इफ यू वांट टू चेरिश एंड रिच, if you want to be like aesthetically pleasing, then maybe life is different for you. But then if you want to be somebody who has a lot of value and worth to you, then you need to approach life with a very different set of glasses. So वो बहुत important है. रही बात IIM की गॉसिप की, आई थिंक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स के पास सारा कंट्रोल होता ही है. ठीक है, सो दे कैन डू अ लॉट फॉर यू इफ यू आर ऑन देयर साइड, डेफिनेटली. एंड आई थिंक कुछ कमिटीज होती हैं और क्लब्स होते हैं जिनका आपस में नहीं बनता है प्लेसमेंट वालों के साथ. आई वोंट टेक द नेम ऑफ दोज क्लब्स एंड कमिटीज, बट येस दैट इज द रियलिटी एट मोस्ट बी स्कूल्स, राइट? सो इट्स ऑलवेज बेस्ट इफ द बैच अप्रोचेज द प्रॉब्लम in a united manner than to look it at कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा या मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा, because कॉर्पोरेट में win-win situation exist करवानी पड़ती है. Otherwise there will always be one losing party, and then that is not a good scenario. That losing party can be an investor, that losing party can be a employee, it could be maybe somebody in the leadership team, maybe the customer, maybe a supplier, maybe a vendor, anybody could be. So it's always best that you strike a middle ground and try to come up with the best possible solution and optimal solution given the resources and constraints that you have. Because that is how life is.
एंड दैट्स हाउ बिजनेस ऑल्सो ऑपरेट्स इन. आपको पता है कि आपका इतना बजट, आप इतना ही खर्च कर सकते हो. Yeah. ऐसा तो नहीं है कि आप मन मांगा कुछ भी बजट ले लोगे और फिर Right. उस पर रिजल्ट नहीं आएगा. देन इट विल बी लाइक Hmm. इट्स नॉट अ लाला लैंड एट द एंड ऑफ द डे. Right, true. तुझे क्या पूछना है? Yeah, मैं and this will be my last thing that I discuss, but being a content creator, you see other creators with you as well, right? Yeah. And I have been associated with such a creator for quite some time. Vaibhav Sisinti, you know who is. Yeah. So as a case study, if we have to break down his journey, the things that he has done right, the way he has built a business, what do you have to say about that? I From- think as far as my limited understanding of Vaibhav goes, I think he has worked his way up. Hmm. Right, he had an agency, and I think it was bootstrapped, and then he got a lot of clients. Right, made some trial and error. Then he launched his course. Also, I think in during COVID times, and there's considerable knowledge that the person carries. Hmm. Right, and then has also been able to demonstrate it and communicate it in a much better manner as compared to most content creators out there. Right, so for him, it's like his full time Right. thing, right, which he's just gotten into it, and then he's been able to scale it up from a 0 to 100 kind of a journey. So I think very few creators will be able to do that because A, they might either lack that discipline, Okay. B, the craziness that is required. It's I think content creation शायद वो लोग कर सकते हैं who are really mad about something. Okay. Right, they are like really passionate about it. So what about So- Vaibhav's content makes you say ki crazy? I think I've seen him talk also. There was Acha. one of the events also where we were, panelist. Okay. So I was judging something and he was evaluating some other team for some other competition. Two parallel, competitions are going on. So I've seen the exuberance that somebody brings in, the vibe, I think that vibrance that somebody carries. आपको पता लग जाता है कि ये सोशल मीडिया देखते होंगे या ये कंटेंट क्रिएटर होंगे बिकॉज दे वॉक द टॉक. राइट, इट्स नॉट लाइक कि एक टेक्स्ट बुक में ये एक पर्सोना बना के दे देते कि सोशल मीडिया मार्केटर को तो अतरंगी कपड़े ही पहनने होते हैं. ऐसा नहीं होता है. यू कैन बी सोफिस्टिकेटेड एंड देन ऑल्सो टॉक सेंस. Yeah. Right, but then the way you say it is going to make all the difference. Right, so I think his journey is one of the classics for people who are starting from maybe a lesser known university or a lesser known college, and then doing something really good with their life. So I think personal brand के अंदर I think is a very good case study for people who are just starting out and they want to do something of their own, and then leverage on that and then build something bigger and then even something bigger over a Yeah. period of time. So I think it requires a lot of guts and perseverance. वरना कोई और कोई इंसान हो तो they might even break and get Yeah. shattered with the failures and the setbacks, because not every day is supposed to be like a bed of roses. It might also be a bed of thorns. Right, तो कस्टमर का कोई फीडबैक आया, अपने बिल्कुल ही दिल पे लगा ली बात, कोई टीम के अंदर कुछ इश्यूज हो गए या whatever, बिजनेस फ्लक्चुएट हो रहा है, कुछ है, but then how do you look at it? Do you see that it's fitting a bigger picture for a larger set of people? I think in that case, I think his journey has been really commendable. पता है एक चीज़ है that makes me love the guy and you said कि he walks the talk. एक तो होता है कि तुम एक इंडिविजुअल को तुम कुछ सिखा देते हो, नाउ इट्स अप टू देम, डू दे टेक दैट नॉलेज इन एंड डू समथिंग अबाउट इट, Absolutely. एंड फिर वो कुछ करता है या नहीं. तो ही हैज़ दो स्टोरीज एज वेल कि जहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा किया विद हिज कोर्स. Yeah. बट वो लोग जैसे आई हैव सीन ग्रोथ स्कूल बीइंग बिल्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, तो द एंड जो आज who are leading, spearheading his verticals at growth school, वो लोग they came in उनके as स्टूडेंट्स होंगे. students, as they students थे, उसके interns थे basically. So उस टाइम पे when I saw those people, उनके साथ मैं interact करता था. जैसे I can name those people, उत्तम है, अम्बरीश है, ओम है. उत्तम I know. हाँ, उत्तम you know, right? उत्तम I know. उत्तम today versus उत्तम 2 years ago when he started out as an intern with Vaibhav, वो ऐसा stark difference है. मतलब I feel so happy कि ये लोग इतना कुछ वैभव से सीख के, जस्ट बाय बीइंग विद हिम एंड सीइंग हिज जर्नी, लर्निंग फ्रॉम इट, इम्प्लीमेंटिंग इट, एंड देन आज वो खुद इतने अच्छे क्रिएटर्स और they've become such good speakers, storytellers.
वो बन गए हैं. सो दैट Hmm. इज व्हाट आई वुड से कि वो वॉक द टॉक वाली चीज़ कि दूसरों को तो सिखाया ही जो पैसे दे रहे हैं, बट जो पैसे ले रहे हैं तुमसे, योर टीम, उन्होंने भी उनको भी he has- they're also implementing that. so Uttam, I know, I met him on campus at SRCC. हाँ, तो Huge great difference. great team he's built for himself. Yeah. And they are his, real Yeah. proof of concept. Exactly. Yes, And- absolutely. And this guy alone himself has taught so many people, not for the sake of money, not for the sake of fame. Nobody even knows that he's taught so many people before growth school as well. He just likes teaching people. And we have I have a school friend, a childhood friend that he taught, and that friend and I were working together in a अच्छा, तू company. मेरी बात कर रहा है? हाँ, अच्छा, मैं मेरे को भी वैभव से, समझ कि इन्हीं की बात कर केशव रहा की बात हो रही है. मेरे को इसी लगा बात मैं वैभव की बात Nah, कर रहा nah. हूँ. I'm talking talking about about you. Like I have a friend Jawad who went and we all worked together. Mukesh, Jawad, Keshav and I at my HQ. This startup called my HQ for co-working spaces, and we were we were paid as a normal fresher guy would be paid. Can reveal my salary. I was earning 33K in hand, and Jawaz was similar. And through his course, like not course, like Jawad went to him after my HQ and he was like, yeah, just teach me how to do Webflow and what is Webflow, what is that, this and that. And he taught him for free. He didn't even teach him for free. He got him on board as an intern, paid him a salary for a project that he could have executed. That guy also executed like really well, and then Yeah. now he's earning like a great sum of amount. I'm not going to reveal his salary, but that I personally give all thanks to Keshav because he became the enabler of that process. Otherwise, Jawad and I, if we were to earn the same salary, we could have not earned the amount that we wanted in like 10-20 years. So, and that journey to cover that journey Yeah. 1 or 2 years, it's commendable. And and I have to give it to him also that Keshav has changed a lot of lives. And that's what I aim to do as well. And that's what I heard in this past hour that you also aim to do, that you want to inspire people. You want to like inspire at least one person so that they can be more. And I think that's mark of a great leader anywhere. So थैंक यू यार. नहीं यार सच है भाई. कोई प्रिपेयर करके थोड़ी जाता कि हाथ पे पन्ने लिख के मैं देख रहा हूँ. खाली यार. हाँ भाई खाली हाथ. बट एक चीज़ हैज़ हैपेंड वेरी वेल कि मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो शुरू से ही मेरे को फाउंडर को भी, मयंक को भी, सो हम वी स्टार्टेड अ फ्री डिज़ाइन कम्युनिटी. जब हमने खुद सीखा ही था थोड़ा बहुत ही, जो चीज़ें आती थी हमने कम्युनिटी बना दी, फ्री के इवेंट करते थे कि सो हमने सोचा कि अभी दुनिया हमको टॉप 1% में कैसे देखेगी. अगर हम एक पैसे ऑलरेडी हो टॉप 1% में. नहीं, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब अभी हम 4 years ago. हाँ 4-5 साल पहले कि अभी हम जूनियर्स हैं किसी एक फील्ड में, तो हम इसके टॉप 1% कैसे बनेंगे. अपना क्राफ्ट तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही, वो तो करना ही है, पैसा भी मिलेगा उससे, बट हमने सोचा जितना आता है ना उसको सिखाना शुरू करो और मुफ्त में ही सिखाओ. एंड दैट वर्क फॉर अस. I think wrap up करते हैं. He has to leave and thank you so much for your time here.